लोकसभा चुनाव और मतदान का दिन अब कुछ ही दिनों में पहुंचने वाला है। तब लगातार राजनीतिक पार्टियों की ओर से जनसंपर्क और मीटिंगों का दौर जारी है। तब ये तस्वीरें जो आ रही है वो अनगढ़ से आ रही है। बड़ौदा में कांग्रेस पार्टी की ओर से जसपाल सिंह पढ़ियार को उम्मीदवार बनाया गया है। तब भारतीय जनता पार्टी के सामने जसपाल सिंह पढ़ियार डॉक्टर हेमांग जोशी के सामने चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं। तब विधानसभा के विरोध पक्ष के नेता अमित चावड़ा और कांग्रेस के लोकसभा के उम्मीदवार जसपाल सिंह पढ़ियार की ओर से आज महिसागर के तट पर आए हुए मोहनी मां के मंदिर में दर्शन किए गए थे। खासतौर पर अनगढ़ के आसपास के विस्तार के नागरिकों के साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में इस मौके पर मौजूद रहे थे। मोहनी माता के आशीर्वाद लेने के साथ ही कांग्रेस के जो उम्मीदवार है जसपाल सिंह पढ़ियार और विरोध पक्ष के नेता अमित चावड़ा ने लोकसभा चुनाव में अपने जीत का विश्वास जताया था। महिसागરના કાંઠે મા મહોણી માતાજીનું મંદિર તમામના શ્રદ્ધાનો એક આસ્થાનું કેન્દ્ર છે। દર વર્ષે કોઈ પણ શુભ કાર્ય કરીએ ત્યારે માતાજીના આશીર્વાદ લેતા હોઈએ છીએ અને આ વખતે પણ સમગ્ર ગુજરાતના લોકોની સુખ શાંતિ અને સમૃદ્ધિની પ્રાર્થના સાથે સૌનું કલ્યાણ થાય, ભાઈચારો વધે અને આખા દેશમાં પ્રેમ મહોબ્બતનો એક ભાવના સાથેનું એક સામુદાયિક પ્રયત્નો થાય એના માટે સૌએ આજે પગપાળા માતાજીના ત્યાં આવીને ધજા ચડાવી છે, પ્રાર્થના કરી છે અને માતાજીને વિનંતી કરી છે કે ગુજરાત અને દેશમાં જે નફરતનું વાતાવરણ છે, જે ભાગલા પાડોની રાજનીતિ ચાલી રહી છે એમાંથી લોકોને મુક્તિ અપાવે, લોકો પ્રેમ અને ભાઈચારા સાથે પરિવારની રીતે જીવીને આ રાજ્ય અને દેશને આગળ વધારવા માટેની શક્તિ આપે એવી પ્રાર્થના કરી છે। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।